Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So Diwali is just knocking in our door, so that's why I'm creating this sparkly glittery smoky eye. This is very easy. So if you want to know how I have created this look, you need to watch till the end. So yeah, without talking too much, let's jump into the video. So I'm starting my makeup with a primer. Primer makes our skin smooth and also keeps makeup for long hour. So primer is very important step of makeup. So next I'm applying a concealer in my shade to hide my pigmentation and dark spot, and applying with my fingertips. This is optional, आप skip भी कर सकते हो. So next I'm applying a foundation and with my fingertips to all over my face and blending everything gently with a beauty blender. You need patience to get a flawless base, so you need to blend very softly and gently, and also don't forget to apply on your neck and blend it beautifully. Next I'm doing my eyebrow. So for that मैं यहाँ पर एक ब्राउन कलर ले रही हूँ आई शेडो, एंड उसको जस्ट मेरा गैपिंग जो है आईब्रो का वही फिल कर रही हूँ. एक्स्ट्रा मत जाना, तो इट विल नॉट लुक गुड. सो नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग अ कंसीलर to my high point of my face and just blending same beauty blender से. So I am blending it in upward direction to get a uplift look. So now this is very much trending. So yeah, next for my eye makeup, here I am taking this burnt orange shade as a transition color of my eye and applying it all over my eye, and then applying these two pink color mixing together and applying as a transition to intensify the look and blending everything so nicely. Then मैं यहाँ पर एक ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड उसको जस्ट क्रीज में, मेरा जो क्रीज लाइन है वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ to make sure कोई भी हर्श लाइन ना दिखे. So then I'm applying a gel eyeliner and you can apply काजल as well. So या जेल eyeliner लेके मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही थिक अप्लाई कर रही हूँ एंड एक स्मचिंग ब्रश लेके उसको अपवर्ड डायरेक्शन में स्मच कर रही हूँ, पर पूरा आई में नहीं करूँगी. जस्ट क्रीज लाइन जहाँ तक है वहाँ तक ही मैं स्मच करूँगी. एंड देन सेम ब्राउन कलर लेके मैं उसको जो एजेस है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक सॉफ्ट लुक देने के लिए. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग शिमरी शेड, दिस ग्रीन शिमरी शेड, एंड उसको मैं अपनी फिंगर टिप्स में लेके उसको दिस ब्लैक कलर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. मैं फिंगर टिप्स के हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ, इससे ज़्यादा पिगमेंटेशंस आती है और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो पाती है. और नेक्स्ट एजेस जो है उसको मैं एक फ्लड ब्रश लेके अच्छे से अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट अनदर आई पे भी सेम आई एम डूइंग. एंड नेक्स्ट फॉर द लोअर लैश लाइन, हेयर आई एम अप्लाइंग द सेम ब्राउन एंड पिंक कलर एक साथ मिक्स करके एक स्मजिंग इफेक्ट दे रही हूँ. एंड नेक्स्ट फॉर इनर कॉर्नर, हेयर आई एम अप्लाइंग लिक्विड आई शेडो फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और मैं ऑफ कैमरा मस्कारा भी अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग कंटूर टू माई फेस to give a structure. So this I am applying very little amount and applying on my jawline, cheekbones and this forehead area. एंड नोज़ को तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नोज़ में कंट्रोल करना. सो या टू गिव अ शेडो टू माई फेस एंड देन अप्लाइंग ब्लश इन माई चीक बोन्स. अच्छे से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. फेस्टिव सीजन में ब्लश तो बहुत ही अच्छा लगता है, सो नोज़ में और चिन एरिया पे भी अप्लाई कर लिया. नेक्स्ट फुल फेस को सेट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर मैं अप्लाई कर रही हूँ टू मेक माई स्किन स्मूथ एंड बेस को थोड़ा स्मूथ एंड मैटिफाई इफेक्ट लगे. सो या एंड एक्सेस को यहाँ पर डस्ट ऑफ कर रही हूँ ऐसे.
Next, I am applying highlighter to high points of my face. नोज़ एरिया, चिन एरिया, फोरहेड एरिया, सब जगह में मैं अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। And last step is applying lipstick. So for lipstick, here I am taking a nude brownish shade. मेरी जो आई मेकअप है थोड़ा सा हेवी है, सो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर न्यूडिश एक पीचिश ब्राउनिश न्यूड शेड अप्लाई किया है, जो कि बहुत ही अच्छे से कम्प्लीमेंट कर रही है। सो या एंड मैंने ऑफ कैमरा सेटिंग्स पे अप्लाई कर लिया। सो हियर इज़ माई फुल लुक। This is my full and final Diwali look. So this is very easy as you have seen, and today for the first time मैं हिंदी में बात किया है। मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, but I'm trying, so if I made mistake, please excuse me for that. प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। इफ दिस वीडियो फेल्ट हेल्पफुल टू यू ऑल, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल ऑफ यू।